Hello, 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 everybody. Happy Children's Day to all of you. I want all of you to switch on your cameras because today is going to be one of the cutest session that you'll ever experience, that you'll ever attend. Okay, so I want all of you to be on camera, come into your full childlike spirit so that we can together enjoy and learn to manifest with ease, manifest just like a child, right? So I want all of you to quickly switch on your cameras and नहीं तो मैंने नाम लेने शुरू कर देने हैं और उसके बाद फिर मैंने रिमूव करने शुरू कर देने हैं. ओके, आई वांट ऑल ऑफ यू टू quickly ऑलराइट switch on your cameras and let's begin this session. Let's begin this session with a little bit of energy shaker. कैसे करते हैं एनर्जी शेक? बताओ कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? बताओ बताओ बताओ. I want all of you to shake off all your boring energies. Let's start with a little bit of dancing. Come on, everybody on camera. Come on, come on. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ. पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. Super. सापा All right. Okay. How many of you are feeling energized? Because today's session is all about energy. It's all about innocence. It's all about joy. It's all about getting our things done through our little magic. Okay. I hope you all are in with me on this. Come on, everybody, write in the chat box. I am in. And I don't like people behind the camera. कैमरा के पीछे चोर छुपते हैं. चोर हो तुम? हाँ, क्या चुराने है मेरा दिल? जल्दी से कैमरा पे आ जाओ फटाफट से. मेरा दिल वैसे ही तुम सबका है, ठीक है? तो वो चुराने की जरूरत नहीं है. आ जाओ रूपा, आ जाओ पूजा, आ जाओ अक्षय, आ जाओ अमन, आ जाओ सुधा, आ जाओ एवरीबॉडी, चंदना, कविता, रविंदर, आ जाओ सब लोग, आ जाओ बाहर. चलिए. ओके, सो टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट लाइफ, and there is nothing more powerful than celebrating your life like a child. Today, I had a session, an Akashic session with Lalita ji. I don't want to go into that, but it was her past life and Akashic, very heavy session. But then something happened that we, realized that being a child is the most amazing thing in this universe. And we had some really deep talks about it. And to our surprise and to not our surprise, today's session is here. So yeah, lots of love to you, Lalita ji. Okay, so when I woke up in the morning today, I was like, okay, so today is Children's Day, and actually I got a message from my child's school, right, from my son's school on my WhatsApp, and then I realized, oh my God, today is Children's Day. Okay, so I said, let's do something about it, and I was asking myself, what can I do on this Children's Day, and I had this idea that we always want to manifest something. हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है? पर जो भी हमको चाहिए होता है, जो भी हमारी डिजायर्स होती हैं, उन डिजायर के साथ साथ हमारी प्रोजेक्शंस भी साथ आती हैं.
हमारी विशेस इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो पाती बिकॉज वी आर विशिंग, वी आर प्रेइंग, we are trying to get our desire from an adult mind. Okay, and an adult mind is full of shit. I'm sorry for this word, but yes, it is full of projections, it is full of crap. We have got so many thoughts, we receive so many projections, we receive so many ideas from every person possibly living on this earth. We are getting it through social media, we are getting through our parents, we are getting through our padosis, dadi, chati, masi, bua, everybody. And some of those thoughts are actually disaligned with our energy. They are not aligned with our energy. You tell me, when you were a child, when you were young and, cute and innocent, you always, you're always happy. You're always having this thought of that, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा. When you ever ask a child, what do you want? He or she'll always say, मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी, मैं बड़ी होके टीचर बनूंगी, मैं बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनूंगा. Right? Up till the age of maybe 5, 6, 7. And then they start to learn things कि यार एस्ट्रोनॉट बनना तो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तो पैसा चाहिए, उसके लिए तो ये चाहिए, उसके लिए तो डेडिकेशन चाहिए. और फिर हम धीरे 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 अपने चीज़ों को लूज आउट करना शुरू कर देते हैं. राइट? पहले हमें लगता है हम बहुत अमीर हैं, हमें लगता है हम इवन अ वेरी some of you are coming from a very humble background, right? You remember, even in the humblest background, people, they live like kings and queens. I mean, princes and princes, है ना? ऐसे ही है ना? I have a house help, and whenever she comes, sometime her daughter comes, and she's I think she's in nursery or KG, and she comes and she sits on our bed and she starts to show me her dresses, and on she takes up her mother's phone, and she'll keep on telling me, मेरी मासी ने मुझे ये दिया, मैंने ये लिया, and she is so happy about her mother got her some clips, and she was so happily showing it to me as if she got a treasure or all of that. And she has no um you know uh, perception about that she's a house help's daughter, right? Her mother may have that, but she does not have. And whenever I'm cooking, she comes to me, in the morning, whenever I'm there cooking, and she'll come to me, and she has this habit to, एक बार she came and she had nothing, उसने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो बाई चांस मैंने पूछा, तो माई हाउस हेल्प से कि दीदी इसको बना दो, ये आज खाना खा के नहीं आई. मैं आ रही थी, उठ के आ गई मेरे साथ. आई सेड क्या खाएगी? शी सेड हार्ट वाला परांठा. Heart wala parantha. So I somehow made a heart wala parantha to her. She might have been telling it to her mother also ki, I want to eat heart wala parantha, and she never had time, or maybe the art, right? So now she says it to every time. Please learn heart shape paratha from auntie. Right? And she is so much in love, and whenever she comes and she sees me, making rotis, usko khana dil कर रहा भी हो और नहीं भी कर रहा हो, she'll say हार्ट वाला परांठा बना दो. And I somehow like it so much. She does not have any limitation. She does not have any prohibition, right? My son, when he was young, I mean, now he's 15. When he was like 5 or 6, whenever he used to go to my mother's house, and whenever my mother used to give her, you know, any gift, give him any gift, or whenever she asked कि क्या लेना है, तुमको क्या चाहिए गिफ्ट में, and he always used to say, especially whenever she used to give her him money or shagun, he always had to say, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं. राइट? तो वन डे माय मदर सेड आस्क्ड, शी सेड कितने पैसे हैं तुम्हारे पापा के साथ? बोलता बहुत पैसे हैं, बहुत सारे करोड़ हैं. तो माय मदर से थोड़े से हमको भी दे दे. बोलता नहीं, वो मेरे पापा के. एंड मैंने कहा तेरे बाप ने आज तक मुझे भी नहीं बताया कि उनके पास बहुत सारे करोड़ हैं. राइट? सो kids, they have their own fantasy world, and that is why they manifest things easily than us. Whenever a child has a desire, it gets fulfilled. But there is a strategy. So today, what I'm going to tell to all of you, I'm going to share with all of you, is the strategies to manifest even the heaviest thing, even the most difficult looking things with ease. Are you ready to do that? Are you in for that? Give me a yes in the chat box. Okay? So I'm going to
sprinkle a lot of pixie dust on your manifestation list today. And I hope all of you have got your pen and paper ready with you. Yeah? All right. So आज हम पहले समझेंगे how we can manifest, how we can, learn something magical, ताकि हम थोड़ा सा यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर सकें, है ना? ठीक है? So whenever you are creating a desire, जब भी हम कोई डिजायर सोचते हैं, कोई इच्छा हमारे मन में आती है, हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ ना उसके प्रोज एंड कॉन साथ में आ जाते हैं, उसके साथ उसकी लिमिटेशंस बाद में आ जाती हैं. इफ आई विल आस्क यू कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू, यू नो हाउ मच मनी डू यू वांट टू manifest in your life. So whenever in the manifestation classes, in the classes of law of attraction, a lot of people say okay, I want to have 1 crore a month and 5 crore a month and all of that. But put a hand on your heart and ask yourself, whenever you say I want to manifest a 10 lakhs a month or a crore a month or 5 crore a month, सेकंड वॉइस आपके दिमाग में आती है, नहीं यार नहीं हो पाएगा. एंड इवन इफ इन द नो एनर्जी ऑफ द सेशन आप उस चीज को बोल भी दो, उसके बाद भी यू विल फील अ लिटिल डिफिकल्टी टू comprehend it. Yes or no? It is there. आप मानो ना मानो, इट इज देयर. ठीक है, आप 2 4 5 दिन मेरे पीछे लग के एफर्मेशंस भी बोल लोगे, उसके बाद फिर वो क्यों, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है. एंड वेन एवर यू शेयर योर ड्रीम्स विद समबडी, दिल से ऐसे थोड़ी ना होता है. Right, so when I shifted my profession to this profession, earlier I was in media, I was like serving in media for good 17 years. And when I shifted my thing to this, and I told my family, when I announced to my family that I'm gonna, you know getting retirement from media and I'm gonna start this thing, so my family had this notion कि हाँ ये पैशन के लिए कर रही है, ठीक है, इस चीज में पैसा थोड़ी ना है, कौन इसको बातें सुनने का. आई वाज एक्चुअली टेलिंग देम आई एम गोइंग टू कोचिंग. सो कोचिंग, लाइफ कोचिंग, ऑल ऑफ दैट वाज वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर ऑल ऑफ देम, राइट? एंड दे वर लाइक, इसके कौन पैसे देता है? माय मदर लॉ टिल दिस डेट समटाइम्स सेज दिस, कौन लोग हैं जो तुमको पैसा देते हैं? ये बातें सुनने का पैसा कौन देता है? राइट? दे हैव देयर ओन नोशंस, दे हैव देयर ओन प्रोजेक्शंस. एवरीबडी सी दिस वर्ल्ड विद देयर ओन चश्मा. ठीक है? And the more you grow in your age, the more chashmas you are gifted with. हर बंदा आपको अपना चश्मा गिफ्ट करने पे लगा हुआ है. Yes or no? The moment you will tell something to somebody, for example, I am these days on a weight loss spree, right? So this time for the first time I've zipped my mouth कि इस बार शेयर नहीं करना है अपने लोगों, आई मीन अपने ट्राइब के बाहर इस चीज को किसी के साथ शेयर नहीं करना है. बिकॉज वेन एवर आई शेयर इट विद समबडी एंड दे स्टार्ट आस्किंग मी व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग, एंड वेन एवर आई टेल देम कि मैं क्या कर रही हूँ, समवन और अदर से नहीं ऐसे नहीं होता है, इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज नॉट दिस, इट इज नॉट दैट. दिस टाइम आई सेड, इस बार बात नहीं करनी है, इस बार अपने मन की करनी है. राइट? most of the time it is whatever it is, if it is a business idea or it is your health idea or anything like that, people have you know they do have something to say. एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक बार शाहरुख खान की कोई इंटरव्यू में देख रही थी एंड ही वाज सेइंग कि मैक्सिमम लोग जो आपको सलाह दे रहे होते हैं ना, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पैसे कमाने की सलाह दे रहा होता है, वो खुद कंगाल होते हैं कभी कभी. सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप किसी से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हो, उस बंदे से जिसकी अपनी सेविंग नील है. विल दैट बी अ गुड आइडिया? राइट? द प्रॉब्लम विद बीइंग एन अडल्ट, दिस इज द प्रॉब्लम विद अडल्टिंग. ठीक है? बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बीइंग एन अडल्ट इज दैट आप चाहो ना चाहो, पीपल आर रेडी टू गिव यू देयर ओन चश्मास. एंड कभी कभी वो चश्मे इतने स्ट्रांग होते हैं, अगर आपकी जड़ें स्ट्रांग ना हो तो वो चश्मे इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चढ़ ही जाते हैं आपके ऊपर. ठीक है, ना चाहते हुए भी इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर एनर्जी फील्ड. एंड जब भी आप उस एनर्जी, उस प्रोजेक्शन से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश करते हो, दोज वॉइसेस कीप ऑन टॉकिंग समथिंग इन योर हेड. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? ठीक है? टुडे ऑनवर्ड्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट बीइंग अ किड अगेन. बिकॉज you remember when we were kids और हमको कोई ऐसी बात बोल देता था
जो हमको अच्छी नहीं लगती थी। मान लो आज मैं किसी को बोल दूं कि यार तुम मोटी लग रही हो, तो दैट पर्सन विल से कि हाँ यार किसी ने मुझे मोटा बोल दिया। अगर मैं बोली यार तुम पे ये कलर नहीं जच रहा, तो हम पकड़ लेते हैं, होता है ना हमारे साथ, सबके साथ होता है। तुम्हारा रंग काला हो गया है क्या, तो हम भागेंगे शीशा देखने। ठीक है, क्या हो गया आजकल मुरझाई मुरझाई लगती हो, एंड हम भागेंगे। ठीक है, so we listen to everybody, but remember when we were small, when we were young, और हमें कोई बोल देता था कि ए तू काली, तो हम आगे से बोलते तो जो बोलता है वही होता है। How many of you remember that? This is one of the most amazing phrase that kids use, right? ठीक है ना, जो बोलता है वही होता है। तो we used to give back without even thinking twice. We were baddies when we were kids. जैसे जैसे हम बढ़ते गए ना, हम अपने दुश्मन बनते गए। ठीक है, सो टुडे ऑनवर्ड्स आई वांट यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम द किड्स। पहली बात तो ये, आई ऑलवेज टॉक अबाउट एनर्जीज, आई ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, राइट? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज आर टॉकिंग, टेलिंग यू कैसे अपनी एनर्जी को अपग्रेड करना है। मेरा एक सिंपल साइंस है। What is high frequency? What is low frequency? When you are happy, when you are joyful, whenever you're having a good emotion, you are in your higher frequency. And whenever you are in any kind of bad emotion, either it is jealousy or self judgment or competition or dilemma or fear or anything, it is all bad emotions, right? So this is all low frequency. Whenever you are joyful, hopeful, in gratitude, in love, in acceptance, all of it is गुड इमोशन, हाई फ्रीक्वेंसी। इतना ही तो करना है। नाउ सम ऑफ यू विल टेल कि मैम अगर आसपास कुछ बुरा हो तो अच्छा इमोशन कैसे क्रिएट करें? होप इज ऑल्सो अ हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हैविंग अ सोल्यूशन माइंडसेट इज ऑल्सो हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर आसपास आग लगी हो और आप नाच रहे हैं कि मेरे को तो हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, मेरे को तो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? आपको पता है चीजें होंगी, बारिश पड़ेगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, बट इवन इन दैट मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस, मोमेंट ऑफ challenge, moment of test, if you are keeping your hope alive, if you are in surrender, if you are having trust in your abilities, आप ये सोचो कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार, भगवान मेरे साथ है, यूनिवर्स हैज माय बैक, दैट इज ऑल्सो हाई फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, सो why children are so happy? Because they always are in high frequency. उनका मेला चल रहा रहता है। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, मतलब, बट दिस इज ट्रूथ, यू मस्ट हैव सीन दिस। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के घरों में डेथ हो जाती है, पर उनके छोटे बच्चे वो वहां पे नाच रहे होते हैं, वो अपने फोन पे कार्टून देख रहे होते हैं, वो गाने चला, उनको नहीं पता क्या हुआ है। दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। आई डोंट वांट यू टू डू दैट, बट दे आर मेनली, किड्स आर मैक्सिमम टाइम दे आर इन देयर हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, even when they are crying and they are cranky, even then they are in their high frequency because they are wanting something, right? वो नीचे लेट जाएंगे, मेरे को चाहिए तो चाहिए, that's also their high frequency, right? So that's your innocence, and innocence is also high frequency. Okay, so today onwards I want you to operate from your high frequencies just like a child. ठीक है, सो ये अपने आप के साथ एक प्रॉमिस कर लो कि जब भी आपने कुछ डिजायर करनी है, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है, कुछ मैनिफेस्ट करने का सोचना है, व्हाट यू विल डू? यू विल आस्क योरसेल्फ, एम आई ऑपरेटिंग फ्रॉम एन adulthood mind, or am I vibrating from my childhood vibration? Just ask that. It's as simple as that. ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे मन में आए कि यार मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, जस्ट yesterday I was coming back to, by the way, the colony that I live in is a very very posh colony, and we have some high heavy duty people living around me. Yesterday I was coming back from my dietitian, and the moment I entered my colony there was a Mercedes G4400 gadi standing. I loved it. I was like, oh my god, this is a good one, right? My husband kind of liked those kind of gadis, right? So I said, I'm not into cars, and I like, oh, this is something that my husband would love to have, right? So I came back and I just saw this price, and this price was 3 crores. Okay. So that gadi was worth 3 crores. And I
Send that picture to my husband. I said, I'm going to gift you this one. He said, क्या हो गया तुझे? I said, I was just coming back and I saw this गाड़ी and I was like, this is something that you like, आपको ऐसा गाड़ी पसंद है ना? तो said, पागल है, 3 करोड़ की गाड़ी है. तो I said, फिर क्या हो गया? I said, I am going to gift it to you. कब? मुझे नहीं पता. 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद. I don't know, but I'm going to gift you this. I just said it. I just sent it to the universe. मेरे को कोई जल्दी नहीं है. I'm not gonna plan for it. I've just told you. I love to have this for my husband. I really want to gift it to my husband. I just said that. ठीक है. अब मिलेगी तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगी तो कोई और बढ़िया चीज मिल जाएगी. राइट. सो अगर ये सोचा जाए, अरे 3 करोड़ की गाड़ी हम कहाँ अभी ले सकते हैं? राइट. अभी तो और बड़ा कुछ पड़ा है. अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? राइट. सो आई वॉन्ट यू टू come across with innocence. ठीक है. I am not a brand conscious person at all, right? But I am a person who loves gifting, and I really want to gift heavy duty stuff to my family, to all my loved ones, to whosoever comes to my energy. So I am asking universe ki send me this soul so that I can gift it to people. Don't you think it will? I'll be granted those wishes, right? So whenever something comes out of greed, and actually I have got a lot of things like that. I have manifested a lot of things like that when I was not in question, when I was not in hurry, when my entire life is a jita jagta saboot of manifestation. I manifested a beautiful house. I just told you, मेरे घर के पास 3 करोड़ की गाड़ी नहीं है, पर मेरे घर के बाहर 3-3 करोड़ की गाड़ियां खड़ी रहती हैं. एनीवेज. ठीक है. बिकॉज देयर समबडी हु लिव्स बिल्कुल मेरे lane में, who have some heavy duty stuff, right? So even the big politicians come sometime. I remember once I entered my colony and सामने देखती हूँ Z plus security, black commandos are coming. I'm like, what the hell? And सामने से there was a big politician coming and we're like this face to face, and I was going there with a lot of attitude, like चल यही रहते हैं हम. Right. Understanding my point? So चाहे वो मेरे पास नहीं आ रहे, बट मैं उस एनर्जी में तो हूं ना. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, वो मेरा भी घर है, सामने मेरा घर है. ठीक है. तो अल्टीमेटली तो मेरे घर के बाहर ही खड़ी है ना. मैं तो वैसे भी गाड़ी में कहाँ जा रही हूँ, सारे दिन तो मैं यहाँ क्लासेस लगाती हूँ. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि भाई लोग मेरे घर के आसपास सारी वो गाड़ियां मंडराती रहती हैं. ठीक है. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. जब हम किसी चीज से स्टक हो जाते हैं ना, it becomes difficult. So I have manifested those kind of things in my life. I come from a very humble background, right? And I have manifested a lot of things. I met Shah Rukh Khan. Okay, I come from a quite a small city comparatively to the bigger cities of India, right? Still, I have met all the biggies. I have met Nasiruddin Shah. I have met Diljit Dosanjh. I have interviewed them, not like met. Like I was there in front of them, sitting right next to their chair, and talking to them. Met, जितने लोग मैं पसंद करती थी, आर्टिस्ट, आई हैव इंटरव्यूड मोस्ट ऑफ देम. ठीक है. मेट कतरीना कैफ, मेट अनुष्का शर्मा. ठीक है. यू नेम इट, आई मेट सो मेनी पीपल. Yesterday I was having a conversation with Harneet. Harneet is assisting me these days beautifully. I'm so glad I got her through my tribe, and like she's working with me tirelessly. And I was discussing with her about Kapil Sharma and his wife and all of that. And she said, "Ma'am, आप ये सारी चीजें बताते क्यों नहीं हो? People take so much pride of telling about I know this person and that person." Or I said, ठीक है, क्या मतलब फ्रेम लगा करा करा के लगाऊं, है ना, ऑल दीज थिंग्स. बट आई एम लिविंग इन दोज वाइब्रेशंस. So I've done, why I'm telling you that I've done that, I've manifested all those things. So whenever I track back my manifestations, I always feel that I was never ziddy about anything, or maybe not overwhelmed about anything, or not maybe questioning anything. That is why I was able to do all of this. Yes. So the thing here is, I want you to have your desire just like a child. Most of my desires were coming from the energy of, and I still feel there's a child
inside of me. I'm very childlike. That's one big, quality I have. Maybe that is inborn with me, but you can always practice things. You can always practice to be a good dancer. You can always practice to be a good singer. You can always practice to be a good sports person. You can always practice to be a law of attraction person, a magical manifester. So the first idea here is to tap in your childlike energy. Go back and ask yourself, how would baby Lalita create a desire? How would baby Harneet create a desire? How would baby Akshay create a desire? Go back, become your 5 years, 6 years old self and ask yourself, जब आप बोल रहे हो कि मुझे ये बड़ी गाड़ी चाहिए तो आपके साथ लिमिटेशंस आ रही हैं, बट जब बेबी हरनीत, बेबी रूपा, बेबी भानु, बेबी मन, शालू, बेबी सुधा, बेबी अंकिता, बेबी ज्योति, बेबी मयूरी, बेबी राजश्री, जब ये लोग मांग रहे हैं ना, तो वहां पे ना इनहिबिशंस नहीं है. So I want you to start doing that. And I'm not gonna only preach you about it. I am going to gift you a beautiful practice that we will do together right now, and you will see the magic. How many of you are ready on that? Are you ready for this magical practice? Okay. I want you to take up your journal and your pen. Okay. And we are gonna turn this magical practice, जो भी हम लिखने वाले हैं, into shakalaka boom boom practice. How many of you know shakalaka boom boom? There was a person who has a जादू वाला पेन. So हमारे पास जादू वाला पेन तो नहीं है, पर हमारे पास जादू वाला दिमाग है. Okay, so we have basically two minds. How many of you know about subconscious mind or all those minds and right mind, left mind, all of that? ठीक है, let's crack it down. Let me crack it down for you. So we have a logical mind and we have a magical mind. Okay, so आप जब भी अपने डोमिनेंट हाथ से लिखते हो, हाउ मेनी ऑफ यू आर लेफ्टी हेयर? कोई है लेफ्टी तो नहीं है यहाँ पे? चलो फिर तो सारे राइट वाले हैं. ठीक है, जब भी आप अपने डोमिनेंट हैंड से लिखते हो, यू आर एक्चुअली राइटिंग फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, विच इज योर लॉजिकल माइंड. टुडे आई वांट यू टू यूज योर मैजिकल माइंड. और वो हम कैसे करेंगे? वी विल राइट समथिंग फ्रॉम अवर नॉन डोमिनेंट हैंड. हेलो हेलो. ओके, forget about it. Remember when we were kids, हमको जब शुरू शुरू में लिखना शुरू किए थे तो टूटा फूटा लिखते थे, लाइन टेढ़ी, बट वी वर सो हैप्पी अबाउट इट कि लिख रहे हैं यार, जाओ भाड़ में. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू राइट योर डिजायर्स टुडे विद योर नॉन डोमिनेंट हैंड. स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, लाइनें उधर उधर बज रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम. ओह दैट्स ग्रेट. फिर तो मुंह से लिख लो राजश्री. Okay, so but you still, there would be some difference between, कोई तो होगा ना डोमिनेंट, थोड़ा डोमिनेंट, लाइक वो होता है ना 51%, 49%, तो जो 49% वाला है ना उससे लिख लो. ठीक है ना? ओके, यू यूज राइट मोर ना, देन सो नॉन डोमिनेंट हैंड कौन सा हुआ? मोस्ट ऑफ अस लेफ्ट. ठीक है, अगर आप लेफ्टी हो तो फिर आपका नॉन डोमिनेंट कौन सा होगा? राइट. आई वॉन्ट यू टू राइट your manifestation, and it can be as crazy as getting a 3 crore की गाड़ी or marrying anybody or I don't know what. ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या करना है? अपनी डिजायर लिखनी है अपने नॉन डोमिनेंट हाथ से, अभी के अभी, यहीं के यहीं. आई एम गोना पुट सम नाइस म्यूजिक. चलो चलो, ठीक है. एंड यू विल राइट एज, आई वुड लव टू हैव, जो भी तुमको चाहिए. ठीक है, 5 crores a month. ठीक है, आई वुड लव टू हैव a world tour. I would love to have so and so. I would love to have this गाड़ी, whatever. ठीक है, चलो let's do this together and see how beautifully we can do this exercise. All right.
And I would love all of you to do this with a smile on your face. Okay, okay. Wrap it up. जितना लिखा गया. Superb. Okay, come back. Now read it. Okay, read it loud to yourself. You all are, by the way, on mute, so मुझे सुनेगा नहीं. So you can write it aloud also. Now tell me, how many of you are actually feeling this was easy? And this wish is also easy. Because when you write with your dominant hand, your right mind is on work. Your conscious mind is on work as well. हाँ कोई बात नहीं, दो लिखा गया तो फिर क्या हुआ, बाद में और लिख लेना. पुट सम नाइस म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, आज सारा रात यही करना बैठ के. ठीक है. यस. एंड नाउ व्हेन यू रेड इट आल्सो ना, अभी तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो आपका मैजिकल माइंड, आपका लेफ्ट माइंड जो है ना, वो अभी काम पे है. तो अभी आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी फीलिंग इन योर auric field that yeah, this is easy, this is doable, it can happen. How many are feeling that कि मैं अकेली हूँ? Yeah. my writer is my writing is still better than many doctors. यार वो उनका बिजनेस ट्रेट है, ठीक है ना, दवाई पता नहीं लगनी चाहिए. Yeah. Right, even my writing is not that bad. अच्छा लिखा गया. But the feeling when I was writing, now you just tell me, अगर यही चीज हम अपने राइट हैंड से लिख रहे होते ना, तो हम साथ साथ ही ना वो कुड़कुड़ 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 जो मैं बताती हूँ वो चल रही होती. क्योंकि आप नॉन डोमिनेंट हाथ से लिख रहे थे, आपको यही था कि स्पेलिंग सही लिखा जाए, ये पूरा लिखा जाए, एंड यू आर जस्ट देयर, यू आर प्रेजेंट. Another logic behind this magical practice was all the Mahatmas, all the big people, all those awakened souls, they ask you to be in the present. When you are present in the present, you get all the presents of life. But most of us lives either in the past or in the future. We are never in the present. When we were writing with our non-dominant hand, we were actually present there. How many of you figured that out? You were present only to that spelling, to that line, you know, you were there, right? So you have written something in present, and you said, I would love to have it. You know, that's the magic of being a child. Another thing that I really would appreciate you to have is, again, let's go back to our childhood. जब हम बच्चे थे और हमको कुछ चाहिए होता था, तो हम अपने माँ बाप को रिझाने की कोशिश करते थे. होता था ना ऐसे कि अगर हमको कुछ हैवी ड्यूटी गिफ्ट चाहिए, हैवी ड्यूटी चीज चाहिए, तो हम अच्छे बच्चे बनने का नाटक करते थे, है ना.
चाहे हम अच्छे बच्चे नहीं भी होते थे, हमको होता था कि नहीं मम्मी को अच्छा बन के दिखाना है, क्योंकि हमको वो वाली डॉल चाहिए, हमको वो वाला साइकिल चाहिए, हमको ये बात मनवानी है, हमको ट्रिप पे जाना है। तो जब हमको वो करना होता था, वी यूज्ड टू बी सो नाइस एंड वी यूज्ड टू एक्ट राइट। ठीक है? अदरवाइज़ चाहे आप पूरा दिन उठते नहीं, किसी की बात नहीं सुनते, पर जब पता था ना कि अब फ़िल्म देखने जाना है दोस्तों के साथ, पता नहीं पापा जाने देंगे कि नहीं, ट्रिप पे जाना है, पता नहीं कोई जाने देगा कि नहीं, साइकिल चाहिए, पता नहीं लेके देंगे कि नहीं, तो हम क्या करते थे, हम एक्शन मोड में आ जाते थे। ठीक है ना? मम्मा कैन आई हेल्प यू? पापा कैन आई हेल्प यू? मैं पकड़ा देती हूँ, मैं कर देता हूँ। हाउ मेनी हैव डन दैट? ये क्या था? इट वाज़ एक्चुअली अ वे to send a signal to your universe at that time, your provider, your source, because your parents was your source, right? We used to act upon something so that they get a signal that, oh, she deserves something better. She deserves a gift, right? So do the same here, apply the same here. When you need something, start to show universe, start to send universe signals that I'm ready. If you want to be a good coach, if you really want to have a lot of clients, if you really want to, take classes, ठीक है? Because most of you are from coaching and all those backgrounds or whatever it is, ठीक है? I want you to start preparing your stuff. How will I give my, sessions? How much do I charge? Make that blueprint. Start, making that blueprint. ठीक है? जैसे how many of you know जब किसी की शादी होने वाली होती है, ठीक है? Especially females, they can relate to this matter. Even males can. I don't know what their feeling around marriage is like. I know what is females feeling around it. तो लड़कियों का तो मुझे एक कंफर्म्ड है कि शादी होते ही ना वो अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखना शुरू कर देती थी और फिर फिगर आउट करती थी कि क्या पहनूंगी, कौन सा ज्वेलरी, कौन सा लहंगा, कलर कौन सा होएगा, शूज कौन से होंगे, यूज टू विजुअलाइज दैट डे। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? है ना? तो यही हमको करना है। When you are desiring something, you are manifesting something, start doing actions. Like if you want a car, start checking their rates, start seeing their pictures. Whenever I take law of attraction classes, a lot of people say, मैम हमको बड़ी गाड़ी खरीदनी है। कौन सी? पता ही नहीं। बड़ी गाड़ी होती कौन सी है? पता ही नहीं। किसी गाड़ी का मॉडल पता है? पता ही नहीं। कितने की आती है? पता ही नहीं। पर बड़ी गाड़ी चाहिए। व्हाट इज दैट? बड़ी गाड़ी तो फिर रेलगाड़ी भी होती है, बड़ी गाड़ी तो ट्रक भी है, बड़ी गाड़ी तो ऑटो भी है। भाई बड़ा क्या हुआ है? ठीक है? जैसे कि वंस आई आस्क्ड माय माय हाउस हेल्प, राइट? आई आस्क्ड हर व्हाट इज योर डिजायर? ठीक है? शी सेड दीदी हमारे पास बहुत पैसा हो। आई सेड बहुत कितना? शी सेड मतलब हमारे घर में 50,000 रुपया आना शुरू हो जाए महीने का तो हम बहुत खुश हैं। उसके लिए 50,000 इज बहुत। आई सेड हाय भगवान, अगर किसी महीने मेरे घर में सिर्फ 50,000 आया मैं तो सर पकड़ लूंगी। हाउ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब किसी का बहुत आपके लिए बहुत कम भी हो सकता है। हमें भी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक, दे सेंड आउट देयर विशेस टू यूनिवर्स। तो जब सेंड आउट करनी है विश तो काम करके दिखाओ ना उसके बारे में। यू वांट टू बी अ कोच, लर्न फ्रॉम अदर पीपल, अटेंड देयर क्लासेस, यू इन्वेस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू रियली वांट टू पीपल हु आर कोचिंग विद मी, टेकिंग ट्रेनिंग्स विद मी, मैं हमेशा पहला सवाल उनसे पूछती हूँ कि भाई आपने अपनी एजुकेशन पे कितना इन्वेस्ट किया है? आपने किसी को कितने पैसे, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप व्हाट इज योर डिजायर्ड टिकट साइज, आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कितना पैसा पे करें? अगर आप मेरे को बोलो कि मैं चाहती हूँ कि मतलब कोई इंसान मेरे को 20,000 पे करे, 30,000 पे करे मेरे एक सेशन का 10,000, क्या आपने किसी के सेशन का 10,000 पे किया है? क्या आपने किसी कोर्स का 50,000 पे किया है? क्या आपने किसी का 1 लाख पे किया? इफ यस, देन यू, जब तक वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, सेंड a signal to universe, no? When you send that signal कि I can spend this, universe says अच्छा, if you can spend this they can have also. how many of you understanding this? Do the action in that situation. अच्छा बच्चा बन के तो दिखाओ, ठीक है? वो चीज करने की कोशिश तो करो। लेटे लेटे बेड पे लड्डू चाहिए, लेटे लेटे बेड पे कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, एबीसीडी एबीसीडी, राम 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 राम, ऐसे नहीं होएगा।
You have to do the inspired action. You have to show universe कि देखो, I am attending seminars so that I can give seminar at some point of time. आपने वो चीज फील ही नहीं की. I remember, I went to, uh, a seminar kind of a thing. How many of you know Rageshwari Sachdeva? Mm. She's a Hindi film heroine. Um, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम, मतलब उसमें वो थी. She was a singer also, right? So I somehow had a conversation with her, and she knows me through. So she had a seminar, and I went there. I've attended so many seminars since my childhood. I was attending seminars and all. So when I went there, and she was making us do some kind of manifestation exercises. And when I was sitting in the front row, and she said, yes, imagine yourself, visualizing yourself doing something you would love to have. Just see yourself on the other side. And when I was visualizing, I was seeing myself standing at her place, and I was looking towards people who were dancing for me, doing visualization, all of it. I felt that inside. Okay? And cut to 1.5 year, I had my own retreat where I was standing on the other side of the stage. Okay? I've been standing on the other side of the stage many times, but it was like a coach making people do exercises, making people do all those things, right? Are you understanding that? तो जो करना है उसके लिए अच्छा बच्चा बन के दिखाना भी पड़ेगा. You have to send universe a signal that you are ready for it. You are ready for this kind of experience. How many of you are getting this? ठीक है? So I hope you are getting what I'm trying to say. Okay. So number one, I want you to desire like a child. Number two, like you to act upon things like a good bacha. Share it to your source that I'm ready for this. Show it your alignment. Show it your integrity. Show it your need for it, your wish for it, right? And show it the right way, so that ये नहीं है कि जाना है जापान, निकल रहे हैं चीन, कि करना तो है वेट लॉस, खा रहे हैं जंक. ठीक है? डिसअलाइनमेंट. बनना तो है हैवी ड्यूटी कोच, पर किसी की क्लास नहीं अटेंड करनी. किसी को देख के मुंह है ना, लेने तो है इतने पैसे पर देने नहीं है इतने पैसे. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स सिंपल साइंस. ठीक है? सो just whenever you are doing something, whenever you're desiring something, ask yourself, am I desiring the right thing? Am I aligned with my desire? अलाइनमेंट होगा तभी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका अलाइनमेंट, ये दोनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ आई वांट यू टू हैव अनदर थिंग learn from kids, and that is, how many of you know that kids have friends? Which friends? Energy friends. How many of you know a lot of kids have their imaginary friends? Today onwards, I also would love you to have an imaginary friend. Okay? You can call it your angel, you can call it your, you know, guiding spirit. I can call you whatever it is. And I would love you to have a presence of that imaginary friend as a symbol. Like I have this unicorn with me. Okay? So who's my imaginary friend? I have my imaginary friend as a magical unicorn. Okay? And we can't think in vacuum, right? But whenever I look it onto this, ठीक है, जनरली मैं मेडिटेशन में बैठूं तो ठीक है, मैं अपने इमेजिनरी फ्रेंड को कॉल अपॉन कर सकती हूँ. ठीक है, ऑल ऑफ दैट. बट व्हाट अबाउट रेगुलर डेज? What about when I am not in my higher energy, right? I would love you to have one symbol of your imaginary friend, just as I have a unicorn. So whenever even I'm not in a good mood, or whenever I'm in my low energies, it sits here in my room. Whenever I look at him, I feel like, oh yeah, I have somebody who can, bless me in the spiritual realm. How many of you are getting this? So today, I love you to have one energy friend. Don't call it an imaginary friend, call it a magical friend. Okay? Have a toy or a symbol or a picture or anything like that. Okay?
and ask yourself why you are having this. For me now, it has a meaning. I've even, attuned him. How many of you know this? I've attuned in. I've attuned him. I've given him a name. This unicorn also have a name. How many of you know that? ठीक है, and that name was selected by name given by my students. ठीक है, her name is Aurora Kochar. Kochar is my, we have names for our pets, so it's my pet. Yeah, it's my friend. So you can also have a pet, by the way, if you really want to. You can afford to have a pet. ठीक है, so you can have a pet also, or you can have a symbolic friend, so that whenever you need a whenever you need an ear to hear your problems, just talk to this friend. Okay? Whenever you need answer, just talk to this friend. And can I tell you, this through this the universe will speak. And it is magical. It does happen. A lot of times I keep it, along with my work desk. And sometime when I'm blank, when I'm creating something and I get blank, I just ask him or her, whatever it is. Okay? Unicorns do not have genders. Okay? So I ask it, okay, how can we do it? What else we can do it? And trust me, I get ideas. It's not about ये दे रहा है आंसर कि कौन दे रहा है, ये पागलपन है. It's about ideas come from heaven. ठीक है? And whenever you have a medium, just like people have deities, ठीक है, they have gods, goddesses, they listen to their gods and goddesses. It's okay if you are into deities and all, it's completely fine. But this is also something that we can have, right? This is another magical practice that you can have. How many of you liking this? Super, super awesome. Are you enjoying this class? How many of you are enjoying? और किस किस को लग रहा है यार ये क्लास तो मुझे अपनी फ्रेंड को भी देनी चाहिए थी. हाँ यार, ये तो मेरे को अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, अपनी डॉटर को, अपनी ABCD को भी देनी चाहिए थी. इसीलिए बोलते हैं, जब भी मैं कोई गिफ्ट क्लास दे रही होती हूँ ना, बांट दिया करो आगे. ठीक है, जब गिफ्ट बांटते हो ना तो और मिलता है. ऑलराइट. So, I'm about to end this class, but before ending this class, I want all of you to do a very small little meditation. How about a very small little meditation? Are you in for a meditation? And how many of you know that my meditations are not like boring meditations? There are some really heavy duty, beautiful stuff, right? So, let's go into the unicorn land. Are you ready to go into the unicorn land? Okay? So, undisturbed हो जाओ, सीधे होके बैठ जाओ, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लो. Okay? And you can close your eyes and on the count of 1, 2, and 3, just immerse yourself in this music and transport into a land that gets created in your head with this music. A beautiful waterside garden, beautiful butterflies, beautiful birds chirping, and some beautiful unicorns running around you. And I want you to imagine yourself as your baby version. It is not you who is exploring this Inara world, this unicorn land. I want your baby self to explore this beautiful unicorn land. And I want you to find a wall, pick up a chalk, and I want you to draw your desire on this wall. This is just like a glass wall, shining, shimmering. ढूंढ लो कहीं से एक सुंदर सा chalk, and I want you to start drawing your wish. And this drawing should not be some heavy duty drawing.
It can be a very simple line drawing, like a childlike drawing of your desire fulfilling. And while making this drawing, you can also feel the presence of all the beautiful light beings, all the butterflies, the beautiful unicorns running around you, and keep on drawing your wish on this beautiful crystal wall. This is your wish wall. So create this beautiful imagination onto this. It can be one wish, it can be your car, it can be piles of money, it can be you getting married, it can be you having a child, it can be you having a beautiful relationship with your someone, any of it. It can be you getting a trophy, an award, fame, some millions of subscribers on your social medias, all right, or your slim, trim, beautiful body, all right. And when you are done drawing, I want you to, with your hand, squeeze this crystal. And just like, kids have those slushes, this crystal is sinking. You are just squeezing it and turning it into a very small crystal, like a tumble in your hand, which has your wishes stored in it. And I want you to put that crystal into the magical water of this unicorn land. Put this crystal into the water and pray to the universe that I have done my work. I've sent you my desire without any greed, with a lot of surrender and trust, and I'm ready to work towards it. Show me the way so that I can make my dreams come true for myself, my loved ones, and for the humanity. And now, if you want, you can just roam around here, just kiss a unicorn, just caress a unicorn. किसी को प्यार करना है, किसी को पलोसना है, किसी यूनिकॉर्न को, किसी बटरफ्लाई को पकड़ना है, अपने हाथ पे बिठाना है. You can do that magical thing and come back with all this magical experience back into your room. Gently wiggle your fingers, wiggle your toes, and as and when you are ready, I want you to put your palms on your eyes and come back. All right. Hello, hello, hello. Tell me, how are you feeling? How many of you loved the land of the unicorns? Ah, superb. And how many of you are feeling that manifestation is not a difficult task at all? We have made it so complex that हमको लगता है पता नहीं कितना ही मुश्किल है. It's not difficult. So today onwards, I want you to create your desires like a child. I want you to visualize it like a child in the unicorn land. I wish you to have your imaginary friend just like I have my unicorn. I want you to start feeling yourself as referring yourself as a magical being or the magical child of this universe. And trust me, universe will grant all your wishes just like a loving father and a loving mother. How Siraneet is writing, it was Harneet in Wonderland. So I want all of you to give one word to this class. I hope you enjoyed this Children Day ka celebration. We have one more thing. We will end this class with a little bit of dancing again. Okay. But before that, give me one word for this class. Everybody.
and come on the camera so that I can click a picture. I can share it in the group so that you can share it on your social media and tell your people that, we have attended a Children's Day special manifestation thing, so that you can make some people jealous of you, right? Kids love to do that also, make people jealous. Don't don't get scared from jealousy, है ना? evil eye जितना सोचोगे उतना होएगा, ठीक है? मैं हमेशा, जब भी लोग मुझे पूछते हैं ना कि मैम आप सब कुछ शेयर करते रहते हो, ये करते रहते हो, आपको नज़र नहीं लगती इफ देयर इज़ एनी इविल आई, लाइक फॉर यू इट कैन बी इविल आई, फॉर मी इट कैन बी इविल डाई। ठीक है? तुम्हारा होगा इविल आई, अपन का तो इविल डाई। ठीक है? सो मेरे पास इविल आने से पहले ही मर जाता है, राइट? सो हाउ किड्स, दे मेक पीपल फील जेलस। देखा, मेरी फ्रॉक तुम्हारी फ्रॉक से सुंदर है, मेरे पापा तुम्हारे पापा से ज़्यादा अमीर है। वी यूज्ड टू डू इट ऑल द टाइम एज़ किड्स एंड कोई नज़र-वज़र नहीं लगती थी। ये जितना नज़र सोच रहे हो ना, जितना इविल को इनवाइट कर रहे हो ना, इविल आए, तो इविल आए हो जाता है। बोले इविल डाई, इविल डाई, इविल डाई, इविल डाई हो जाएगा। ओके, सो आज के बाद नो इविल आई, ओनली इविल डाई। ओके? ऑलराइट, सुपर डुपर ऑसम। एंड नाउ आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। How many of you loved that crystal that you sent into the, your wish crystal? How many loved that idea? So today I want all of you to have an unicorn land Inara land charged energized crystals from me. Okay? So I have created something. I have energized some beautiful crystals. So you can order one crystal. क्या करना है उसका? So it will come to you like this, but it can be a random one. So I'll pick and choose, and it'll send. It can be a pink in color, green in color, brown in color, white in color. It's all semi-precious crystals. Okay. So I've energized a lot of them. You can have it for yourself. You can have it for your kids. You can have it for your friends. You can gift it to others also. What you need to do every night when you are going to bed, okay, you just need to have it in your hand. You can have it in this case and you can put it back into this case only. Get it, okay, in your hand, and see all the wishes that you've just drawn on your wish, wall. अभी करा ना? So see it, जैसे वो crystal ball में होता है ना, see all your wishes into this. Kiss it, put it back and put it by your bedside. Can I tell you, this will be magical. I believe in the magical stuff. If you believe in the magical stuff, you can have it. So Harneet is putting up the link. The link will also be shared in the group, and it is very, very. Indradeep has already have one. You already have something. Okay, so people who don't have my crystals, this is super inexpensive. This is just for 555. Okay, so you can have it for yourself. You can have it for mother, father, brother, daughter, whosoever. And trust me, it is gonna be one shakalaka boom boom crystal. So whosoever will have it, they will have their wishes come true. Okay, और जिनको नहीं पता इसको कैसे यूज करना है, just yesterday we have put up a reel. Okay, there was a reel yesterday about a crystal. ठीक है, so they send them this reel, जिसको भी आप भेज रहे हो उसको वो रील भेज दो, बोलो ये देखो, बस जो इस रील में बोला है वही करना है. Got it? Or you can tell them also how to use it. Yeah, so whosoever want it, the link is there. You can pay it through credit card, debit card, and if you like this class, uh, if you really want to remember its magic, it can be a symbol of that magic. Okay, so yeah, just go and take it. There are so many of it. I have like more than 50 60s energize, so you can get them and have fun and remember your desires with love, with joy. Start writing your affirmations and your wishes with your non-dominant hand. Okay, start visualizing it going into unicorn land, and just just have trust and surrender in your abilities. You are a magical being. You are a unicorn by yourself. So just do not ever forget the magic that you are. All right? Okay? So if you ready to show me some love, चलो लास्ट डांस करते हैं. अरे पहले, उससे पहले सब लोग कैमरा पे हो. पिक्चर तो क्लिक नहीं की, पिक्चर क्लिक करनी है. ऐसे करते हैं, स्माइल करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं. आई डोंट नो, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. मेरा ये फेवरेट है, सो आई डू दिस. Okay, let's do it again. Okay, yeah, this one is good. The Korean heart. Yeah, let's do the Korean heart. Or this heart, whatever heart you. Yeah, do the Korean heart. Come on. All right, give me a second.
All right. Thank you so much. I'll send it to my team so that they can send it to the group. Okay. And let's end this class with a little bit of dancing. Let's dance on the unicorn. Okay. I'm putting up unicorn song. Let's dance on the unicorn song so that हमारे अंदर का सोया हुआ यूनिकॉर्न जागे. I am a unicorn shining bright, shining bright. Money flows like a golden light, golden light. Magic, wealth, and joy I see, joy I see. Abundance grows so easily, easily. Ooh yeah, thank you, universe, I'm free, I'm free. Ooh yeah, watch the world give back to me, to me. Ooh yeah, dreams align so perfectly. Okay, I want all of you to Perfectly. unmute yourself. I'm the light just Just want to do this thing for all of you. Unmute yourself. All of you, unmute yourself. You can do it. sparkling skies. Unmute yourself and say, I am a unicorn. Shout it out. I'm a unicorn. Thank you so much. Lots of love. Lots of love. Bye bye. Happy